Excuse me, yaar. All right, so who is recording the lecture for today? Okay, Usman, you are. Anyone else यार? 2-3 लोग रिकॉर्ड कर लो. अली असगर कर रहा है, ठीक है. उमर रागिब, मैं तुम्हारा ऑन कर दूं. उमर, you are not using a laptop, I believe. So तुम्हारा रिकॉर्ड तो नहीं होगा. Because I cannot see an option with me. So मोबाइल के ऊपर ऑप्शन नहीं आएगा. Excuse me, guys. सेल फोन पे ऑप्शन नहीं आएगा. So एटलीस्ट एंड्रॉइड पे तो नहीं आता. ठीक है. Who else is recording? So Ali Asgar is recording. Mohammad Usman is recording. Anyone else? सिद्रा, मैंने तुम्हारा भी स्विच ऑन. लेट मी सी. So Sidra, just give me a minute. ठीक है सिद्रा, तुम भी रिकॉर्ड कर रही हो. सही है. What about Aisha Mubashir? Aisha Mubashir, I've allowed you as well. Okay, I guess most of the students have joined in. So start कर लेता हूँ. नहीं Adam यार, I cannot start with oscillations today. मुझे यार gravitation आज complete करना है. So hopefully next class से यार I can start oscillations. तो SHM next वाली class से आदम करा दूंगा यार. ठीक है, if that works out fine with you. चलो यार, thank you. All right. So excuse me yaar. All right, so yaar, previous class ke andar we did the working for gravitation potential. So let me quickly get through with the working जो हमने previous class में करी थी, फिर मैं आगे proceed करता हूँ. So in the previous class we discussed that gravitation potential was denoted by the symbol of phi. It was measured in units of joules per kilogram. We also realized that the concept of change in gravitation potential can be written as follows. So delta phi is equal to phi's final value minus initial value. Reha is asking who is recording. Reha, I guess there are around 10 students. Ali Asgar is one of them. Let me see here. Mohammad Usman is another one.
Ali Asgar is another one. Sidra Ali is another one. So I guess at least 10 हैं. मेरा ख्याल है 8 to 10 students तो हैं. All right, यार. So now moving on further. अब जो next वाली working करनी है. ठीक है. So previous class के अंदर we did the working of gravitation potential. That was phi is equal to minus gm upon r. Then the next working that we did was change in gravitation potential. This was denoted by the symbol of delta phi, and this was given by the formula final value minus the initial value. ठीक है, ये काम last वाली class में conclude कर लिया था. So moving on further, जो next वाली working करनी है, that is concept of gravitational potential energy. All right. So working follow कर लेना. So this is denoted by the symbol of capital U. It is measured in units of joules. And it is given by the formula U is equal to phi times m, where m denotes the mass of the moving object. फॉर्मूले के अराउंड बॉक्स बना देता हूं. बाकी तो स्टेटमेंट्स हैं, वो आई गेस आप खुद लर्न कर लीजिएगा. एंड देन एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, इसके साथ नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है, which comes under the heading of change in gravitational potential energy. So this is denoted by the symbol of delta U. It is also measured in units of joules, and it is given by the formula delta U is equal to delta phi into m. This is one way of writing it down. Boxes बनाता जा रहा हूं. Or alternately, delta U is equal to final value of phi minus initial value of phi multiplied by m. Any one of the two results. So how do we apply these results? आज थोड़ा सा इसका काम कर लेते हैं. So with regards to the application of these formulas, let me start with the first example. All right, so let's suppose if in the diagram I were to represent Earth as the source mass. Let's also assume
that there is an object of mass 5 kilograms. The initial position of the object is shown in the diagram. And this object is located at a distance of 7.2 times 10 to the power of 7 meters away from the center of the earth. Okay, so this is the initial position. Now, if I were to assume कि मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं towards the earth. So let me write down the wording that the object is projected inwards such that from its initial position it reaches its final position. And the distance given to you for the final position is 6.4 times 10 to the power of 7 meters. Okay, so an object of mass 5 kilograms is projected inwards from its initial position to a final position. And imagine if the question says, assuming no energy losses, calculate the final speed of the object. Okay, so for a question like this, we can use the above formulas as follows. So मेरी working के steps पहले देख लेना, फिर इसके बाद formulas apply कर लेते हैं. So as the object is projected inwards, you would agree that there is going to be a gain in the kinetic energy of the object, and there is going to be a loss in the gravitational potential energy of the object. Okay, I can represent the loss in gravitational potential energy by the symbol of delta U. अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि यार अप्लाई कैसे होगा. So gain in kinetic energy can be represented by the term half m v square, where v is the speed that we are trying to calculate. And on the right hand side, delta U can be replaced by the term delta phi times m. The mass of the object gets cancelled from both the sides. If you simplify this further, you will get half times v square. Delta phi can be replaced by the term final value minus the initial value. अब नंबर्स आपके पास डायग्राम पर हैं, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता जा रहा हूं. So this should be half times v square equals, okay, stepwise. The final value can be replaced as follows. I'm applying the formula of phi minus gm divided by, you can check out the distance from the diagram. The distance of the final position is mentioned with the green marker. So 6.4 times 10 to the power of 7. Likewise, the initial value of phi can be expressed as follows. Once again, minus gm. The initial position is the one shown with the red marker. So that is 7.2 times 10 to the power of 7. Simplify यार आपको करना पड़ेगा. So once again, let me just give you the values of G and M. यार कोई एक आध स्टूडेंट प्लीज मेरे लिए थोड़ी सी ये वर्किंग कर लेना. Just the answer for the right hand side. So I've given you the values of G and M so that we can sort this out.
So if anyone has a calculator, जरा please मुझे right hand side वाला आंसर दे देना. I don't quite know कि आंसर कितना बनेगा. So I'm just waiting for someone to respond. अगर किसी का कुछ result आ जाए तो. Okay, जब तक तुम लोग निकालोगे तब तक I think मैं खुद figure out कर लूंगा. ठीक है. Okay, यार I guess ये result आ रहा है. I'm assuming कि ये result आ रहा है. अब let's proceed on to calculate the speed. So before I move on to the speed, एक statement पहले follow कर लेना. We can ignore the minus sign. In the final step, because in the heading, we have already mentioned the term okay, let me just double underline that term as well. So since in the heading we have already mentioned the term loss, so last step ke andar we don't need to, I guess I'm right. Thank you, Aisha. So it was 6.9 times 10 to the power of 5. So we can ignore the minus sign in the final step because in the heading we have already mentioned the term loss. If you continue further, you'll end up getting this result: half times v square is equal to this result. यार आयशा जरा फर्दर भी सॉर्ट आउट बेटा करके देख लो आंसर कितना आ रहा है. And I think the final velocity over here probably turns out to be 7700. Okay, 1179. Sorry, change कर देता हूँ. यार मुझे तुम लोगों के आंसर पे इतना ट्रस्ट नहीं है जितना कि आयशा के आंसर पे ट्रस्ट है. So let Aisha come up with the answer. कि स्क्वायर रूट करके कितना आंसर बनेगा. उसका आ जाता है ना तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ. ओके 1179. ठीक है यार. 1200 कर देता हूँ. I've just given the answer correct to two significant figures. ठीक है. So based on the diagram, you are asked to calculate इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी. Let me just zoom in. So value of the final speed at this point is approximately coming out to be 1200 meters per second. ठीक है. I've just mentioned that value on the diagram. All right. Proceeding on further. अब यार जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है in continuation, that comes under the heading of concept of escape velocity. पहले डेफिनेशन देख लें फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं. It is defined as the minimum speed with which an object can be projected from the Earth's surface such that
it escapes the Earth's gravitational field. That is, it reaches infinity. ठीक है, so पहले तो definition देख लेना. The minimum speed with which an object can be projected from the Earth's surface, such that it escapes the Earth's gravitational field. That is, Josefa ने लिखा है, would they cut marks if you wrote 1179? हाँ, Josefa, A2s में they are very particular. They want the answers correct to 2SF. So I think rounding off फिर आपको कर लेनी चाहिए, या at least आदत बना लो करने की. Okay, so minimum speed with which an object can be projected from the Earth's surface, such that it escapes the Earth's gravitational field. That is, it reaches infinity. Its value can be calculated using the following equation. Brackets में लिख देता हूं. इसकी derivation is required. ठीक है. So how can we work out the value for the escape velocity? Let's start with the diagram first. फिर आगे proceed करते हैं. So imagine the source mass once again is the Earth. Let's assume that there is an object of mass small m positioned on the surface of the Earth. Let's also assume कि मैंने इस object को project किया. So let me write down with the statement, the object is this time projected outwards, such that कि ये object travel करता हुआ जाएगा. और let's assume कि ये travel करते करते it approaches infinity. Where the infinity is shown as the dotted line. And in the diagram I've shown you that the object starts from its initial position. Since it is projected outwards, it continues to move further and further away until it reaches its final position, such that the object escapes the Earth's gravitational field. So अगर ये scenario create होता है, then the velocity of projection is given a special name, and that velocity is referred to as the escape velocity. Okay, so by definition, it is the minimum speed with which an object can be projected from the Earth's surface, such that it escapes the Earth's gravitational field, that is, it reaches infinity. So here, how would we work out the value? So derivation is required. So calculation follow कर लीजिएगा. अच्छा यार, मेरी स्क्रीन पे शायद लिखा हुआ आ रहा है, my internet connection is unstable. So in case if I get disconnected, तो आप rejoin कर लेना. All right. तब working क्या करनी है वो देख लेते हैं. So again, based on law of conservation of energy, we can suggest the following: that there is going to be a loss in the kinetic energy of the object, at the expense of which there is going to be a gain in the gravitational potential energy. मैं डायग्राम पे डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं और इसके बाद वर्किंग को फर्दर कंटिन्यू करता हूं. So if I were to mark the distances from the center, so for the initial position, I can assume the distance to be capital R.
And for the final position, I can assume the distance to be infinity. All right. So let's see क्या result बनता है. So once again, my statement for loss in kinetic energy would be half m v escape square, basically half mv square. On the right hand side, again delta phi into m. Now once again, the first thing to recognize is the fact that the escape velocity does not depend on the mass of the object. Because since the fact that mass gets cancelled out, the value of the escape velocity is not dependent on the mass of the object. So if I continue further with the working, I'll keep the diagram intact ताकि numbers वगैरह फिर आप diagram से follow कर लो. So the left hand side will be half times v escape square. Right hand side will be final value minus the initial value. If I proceed further, it will be half times v escape square. Okay, the final value can be written down as follows. अब diagram से numbers देख लेना. Minus gm divided by the distance of the final value in the diagram is the one shown with the orange marker. That's infinity. I can simplify this in the next step. And for the initial position, the distance of the initial position in the diagram is shown with the dark blue marker, which is r. तो जरा numbers को diagram पर से देख लेना. Final position के लिए the distance is infinite, so minus gm upon infinity. और initial वाली position के लिए the distance was denoted on the diagram as capital R, so minus gm upon capital R. मैं दोनों को थोड़ा सा highlight कर दूं तो आपको numbers मिल जाएंगे. So I'm referring to infinity. ठीक है, I'm referring to infinity as the final वाली position, and I'm referring to the distance R as the initial position. हाँ जी, final answer जो आपने दे दिया है वो अभी लिख लेता हूं. So the first result which I'll get from the simplification, यार ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया. अभी कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड. Just a mathematical observation, although most of you would know this. यार ये पूरा का पूरा रिजल्ट, although I haven't simplified, but I guess आप जज कर सकते हो कि any number divided by infinity, so this result reduces to zero. आप simplify mathematically कर लीजिएगा. This will be the first result. So this is the first formula for calculating the escape velocity. Now also recall कि previously we have done the formula G is equal to
gm upon r square. So if we make gm the subject, we will get gm is equal to gr square. And if we replace, excuse me, this value of gm in the above equation, we get an alternate formula, that is, replace आप कर देना यार, मैं सिर्फ alternate वाला formula लिख देता हूं. So yes, so if you replace the statement which I am underlining using the highlighter, तो replace आप करके देख लीजिएगा, and the result that you will end up getting can be written down in this form. So basically two results for calculating the value for the escape velocity. Now, if you are interested in calculating, okay, so Ali Asgar ने जो आंसर मुझे दिया था ना, Ali Asgar तुम्हारा वाला आंसर मेरे सेकंड रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है, और हुसैन शेख the answer that you provided वो आंसर मेरे फर्स्ट रिजल्ट के साथ मैच कर रहा था. So if I provide you with the values, so capital G, radius of the earth, mass of the earth, तो numbers यार मैंने आपको दे दिए हैं. So if you plug in these values into any one of these formulas, then the final answer for escape velocity that you get will be approximately, numbers आप plug in करके देख लीजिएगा, solve करके देख लें, and the final answer for the escape velocity that you will get will be approximately 11,200 meters per second, or 11.2 kilometers per second. सही है. So based on this answer, we can conclude that if Earth is considered to be in isolation, let me complete the statement, फिर read out कर दूं. So we can conclude. मोहम्मद हुसैन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी दे देता हूं. So Ali Asgar, the answer that you have suggested उसको मैंने round off कर दिया. So if Earth is considered to be in isolation, then the escape velocity, assuming no energy losses, is 11,200. Now the question that Hussein is asking, let me just read that question out loud. So his question is this the speed rockets take off? So you need to understand that this principle does not apply
any object which has an engine slash thrust associated with it. So no, this is not the speed with which rockets will take off, Hussein Sheikh, because this principle does not apply to any object which has an engine associated with it. Rather, you can say that this is the velocity just as an example with which a football or a baseball will be launched slash projected to escape the Earth's gravitational field. Okay, Hussein, so Tasleem, I'll come back to that. So Hussein, this is not the speed with which rockets will take off, because this formula is taking into consideration कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है उन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनके साथ कोई इंजन या कोई थ्रस्ट एसोसिएटेड नहीं हो. So you can say this is the velocity with which you can project a football, you can project a baseball, कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ engine associated नहीं हो. Then if you project that object with this value of 11,200 meters per second from the Earth's surface and assuming no energy losses, then this object will not return back to the Earth's surface. ठीक है? Yes. Hussein, your second statement is right. Technically speaking, this value is impossible. Yes. Okay. Tasleem ne likha hua tha. Can you explain the formula number 1 once again? Tasleem, where do I? Tasleem, मुझे कौन से वाले स्टेप से स्टार्ट करना है आप मुझे बता दो. तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. इज दिस द स्टेप जहां से मुझे स्टार्ट करना है? मुझे यस या नो करके बता दो. सो फिर मैं वहां से बेटा प्रोसीड कर लेता हूँ. ठीक है. सो फाई का फॉर्मूला तस्लीम वाज दिस. आई एम जस्ट राइटिंग दैट एज अ साइड नोट. ठीक है. So phi was minus gm upon r. So if you go back to the diagram, Tasneem, for the final value, I've written down the formula as minus gm upon phi. Phi is the final distance. ठीक है. डायग्राम से चेक कर लो, आपको मिल जाएगा. And then for the initial value, I've written down the same formula as minus gm divided by capital R, because capital R from the diagram is the initial distance. तो यहाँ तक फॉलो हो गया. जिस पॉइंट तक मैं स्टेरिक बना रहा हूँ, सो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. All right. So Tasneem, any number divided by infinity gives you 0. Hence, with the green marker, I've indicated that minus gm upon infinity is 0, because any number divided by infinity is 0. So मैंने यार फर्स्ट वाले रिजल्ट को बेटा 0 कर दिया. इनफैक्ट इफ यू वांट तो थोड़ा सा बुरा बन जाएगा, लेकिन मैं 0 कर देता हूँ. लेट्स गो विद द पिंक हाइलाइटर्स. जबरदस्त. अच्छा सा 0 बन गया. अब तस्नीम तुम खुद जरा नंबर्स को फिगर आउट करके देख लो कि इफ द फर्स्ट रिजल्ट शोन विद द पिंक हाइलाइटर, if that reduces to 0, so I guess if you simplify this further, you should be able to get the first answer. So acknowledge कर दो तस्नीम, you are okay with that, ताकि फिर बेटा मैं आगे मूव कर जाऊं. All right, no issues बेटा. ठीक है. I'll leave this messed up portion, so it's fine. बाद में जब मैं अपलोड करूंगा तो ये सारी डिटेलिंग हटा दूंगा, because I don't think you need that. All right, so आगे प्रोसीड करता हूं. Okay, let me move on to the next slide. ठीक है. All right. Now extending this idea further,
So यार अब अगली चीज ये डिस्कस करनी है कि how to calculate escape velocity if Earth is not in isolation. That is, if Earth and Moon are both taken into consideration. ठीक है, so we'll extend this idea. यार रिहा चीजें तो हैं बेटा थोड़ी सी इस टॉपिक के अंदर अभी और हैं यार. ये सारा कुछ सिलेबस के अंदर है बेटा इसलिए कराना पड़ रहा है. ओके सो यार अर्थ आपके पास आ गया. आई एम श्योर रिहा ये सारी डिटेलिंग स्कूल में की होगी तुमने यार. साथ में मैंने मून भी अज्यूम कर लिया. और रिमेंबर प्रीवियसली हम लोगों ने बिटवीन द अर्थ एंड मून एक नल पॉइंट को भी लोकेट किया था. ठीक है तो अच्छा नहीं किया. ओके इसके तो खैर यार पास्ट पेपर में काफी क्वेश्चंस भी आते हैं स्पेशली दिस कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि व्हाट आई विल डू इज कि मैं अर्थ के लिए पहले फाई का ग्राफ बना देता हूं. सो द वर्टिकल एक्सिस इज फाई, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज डिस्टेंस आर. और पहले मैं ये करता हूं कि मैं अर्थ के लिए फाई का ग्राफ बना रहा हूं. सो रिमेंबर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एंड वी एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड दिस ग्राफ प्रीवियसली एज वेल. So if you recall from the previous lecture, हमने लास्ट क्लास के अंदर ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया था. लेट मी मार्क द रेडियस ऑफ द अर्थ एज आर ई. पहले मैं अर्थ के रेफरेंस से ग्राफ बना लूं. दैट्स द वन शोन विद द ग्रीन मार्कर. सही. So this graph is displaying how the value of gravitation potential changes with respect to the earth. So I've taken earth as the reference and the green portion of the graph basically tells us how the graph of pi against r would look like for the earth. तो एक ग्राफ तो बन गया. अच्छा अब using a separate color, if I were to ask you कि मुझे on the same axis similar ग्राफ बनाना है but this time for moon. सही. तो अब मुझे मून के लिए on the left hand side of moon exactly same phi का ग्राफ बनाना है. तो मून के लेफ्ट हैंड साइड पे बना रहा हूं. अर्थ के राइट हैंड साइड पे कंस्ट्रक्ट किया था. तो मून के लिए ग्राफ की कंपाइलेशन भी देख लें. एग्जैक्टली सेम शेप बना रहा हूं. दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस सो कॉल्ड वो ऑरेंज वाला कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप मून को स्टैब्लिश कर लो. एग्जैक्टली सेम ग्राफ. तो मैंने दोनों के ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया है. फॉर द अर्थ्स पर्सपेक्टिव आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस ग्राफ ऑफ फाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अर्थ. And from the moon's perspective, I've constructed the same graph of phi, but this time to the left-hand side of the moon. So दोनों exactly same graphs हैं. Earth के right-hand side पे बनाया है और moon के reference से मैंने moon के left-hand side पे बनाया है. So let me label the orange वाला graph as the graph of phi constructed for moon. Sketches बनाए हैं, बहुत खूबसूरत तो नहीं बने हुए, लेकिन मेरा ख्याल है काम चल जाएगा. अब if I finally ask you, let me go with red color now. And if I now finally ask you, sketch
sketch the graph of phi resultant. So पहले मैं phi के दोनों ग्राफ्स को अब मुझे accommodate करना है, तो बेसिकली मुझे दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाना है. मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं कंबाइंड वाला ग्राफ. आप मेरे इस कंबाइंड वाले ग्राफ को फॉलो कर लीजिए. इसके बाद मैं रीजनिंग भी लिख दूंगा कि ऐसा शेप क्यों बना है. सो द कंबाइंड ग्राफ और द रिजल्टेंट ग्राफ फॉर बोथ अर्थ एंड मून, अगेन बहुत एग्जैक्ट नहीं बना रहा, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट it should be something along these lines. Now if somebody is kind of thinking कि यार ये वाला ग्राफ सर ने कैसे जज किया, कि how did we get the combined graph, the green and the orange portion when combined together, so how are we able to get this red wala graph? Let me just label this. So यार why this graph has been constructed, उसकी justification मैं भी लिख लेता हूँ. But before that, I'm sure you would agree कि जो मेरा turning point आपको नजर आ रहा होगा, माशाल्लाह अच्छा बन गया. If you want to label तो आप डायग्राम पे भी लेबल कर देना null point. Otherwise मैंने टॉप पे तो लेबल कर दिया है. So for those of you who are wondering कि यार ये रेड वाला शेप सर ने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, how did we obtain the combined graph? So let me write down the wording. ठीक है. So if you are trying to look for some reasoning as to why this red graph has been constructed as the combined graph, so मैं wordings लिख रहा हूँ, आप इसको relate कर लो. On the left hand side of the null point, Earth's gravitation field is more prominent. Therefore, the red graph follows the green pattern, and on the right hand side of the null point, if you read my wordings alongside the diagram, so maybe आप justification आपको मिल जाएगी कि why the red graph is the way we have constructed it. So on the right hand side of the null point, Moon's gravitational field is more prominent. Therefore, the red graph follows the orange pattern. So before I continue, जरा acknowledge कर दोगे कि you guys are okay with the resultant graph shown with the red marker and why that kind of a graph has been constructed. फिर मैं आगे proceed करता हूँ. So just a few of you, थोड़ा सा मुझे, ठीक है, thank you अली. एक दो लोग यार जरा और मेरी wordings के साथ अगर आप correlate कर रहे हो ना, ठीक है, thank you तस्लीम जी और thank you उमर भाई and Aisha as well. ठीक है, clear, fine, thank you. So अब यार, let's extend this idea further. Keep in mind, my intention was to calculate the escape velocity when Earth is no longer in isolation. So that is why I constructed. Why did you make the red graph a bit lower? Hussein, both graphs, green and orange, are negative graphs. है ना? देखो दोनों graphs negatives में है. If you add up two negative values, Hussein, shouldn't the answer be even more negative? And if you're okay with my statement that two negative values, if added together, will produce an even higher negative answer,
So then that kind of explains your question. Okay sir, ठीक है यार. So अब यार मैं what I'll do is कि मेरे पास space नहीं है. So let me just construct the same graph once again. But this time I'll provide you with some values. It's the same graph of phi against r. Okay, I'm just reconstructing the resultant wala graph only. With some numerical values for solving purposes. So अब यार बस एक ही ग्राफ बना रहा हूँ जो रिजल्टेंट वाला ग्राफ था ना, बस उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, which was actually the red one. If you need, I can scroll back up so you can compare. ठीक है, सर मैंने सिर्फ रिजल्टेंट वाले ग्राफ को once again कंस्ट्रक्ट कर दिया है. And this time around, let me just give you some numbers to work around with as well. Okay. So the black dot labeled as A is the Earth's surface. And let's suppose the value is given to you. Numbers में सिर्फ numerical calculations के लिए दे रहा हूँ. So don't quote me on these numbers. They are not necessarily correct numbers, just for calculation purposes. ठीक है, सो यार मैंने आपको अर्थ के सरफेस के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी है. इनफैक्ट अजीब लग रहा है ऐसे लिखना. लेट मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट अच्छे तरीके से लिख लूं, मुझे सुकून हो जाएगा. फाइ लिख दिया, स्लैश करके जूल्स पर किलोग्राम लिख दिया, ब्रैकेट्स के अंदर 10 टू द पावर ऑफ 6 लिख दिया. सो नाउ दिस वे अराउंड मुझे सारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा. एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. आई जस्ट नीड टू राइट the absolute value. Everything else is on the vertical axis. So on the moon, on its surface, Ryan. Yes, Ryan. Because moon has a smaller radius, na? And a smaller mass as well. अच्छा यार, so A वाला point आपका Earth का surface था. Green वाला point, let's call this as C. ये आपका moon का surface है. अच्छा, इसकी भी कोई value provide कर देता हूँ. So let's suppose आपको ये number given है. और इसके साथ साथ ये जो point B है, the so-called null point. इसका नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ. लेट्स से एज फॉलोज. आई नीड द नंबर्स. सो अब इमेजिन इफ द ग्राफ इज गिवन टू यू अलोंगसाइड दीज नंबर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन काफी काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं, स्पेशली इसमें दो पार्ट्स बहुत दफा पूछते हैं. सो इमेजिन इफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट. Using the given values,
calculate the escape velocity from the Earth's surface. I think you would all agree. In order to approach this question, let me start with the theoretical statement first. उसके बाद numerical numbers को use कर लेता हूँ. So using the given values, calculate the escape velocity from the Earth's surface. So पहले wordings देख लेना. For object to escape the Earth, it must be projected with a velocity which is at least good enough to ensure that it reaches the null point or goes slightly beyond the null point. If you guys are okay with this statement, for the object to escape the Earth, it must now be projected with a velocity. Let me just include the word now. It must now be projected with a velocity which is at least good enough to ensure that it reaches the null point or goes slightly beyond the null point. So if you're okay with this statement, then on the basis of this statement, you would agree that I should be taking A as my initial position and B as my final position. So if the object is projected from the Earth's surface, and if you want the object to escape the gravitational field, now you no longer want the object to reach infinity, but rather the job gets done even if the object reaches the null point. So the point A labeled on the diagram is the initial position, and the null point labeled as B on the diagram works out to be the final position. So hence मैंने A initial और B final लिख दिया है. अब calculation करते हैं. I'll need the diagram. So आप थोड़े से numbers जरा याद रख लो. A का number is -57.6 ताकि मुझे scroll up ना करना पड़े. और B का position is -28.2. So let's see how we can apply these values to calculate the escape velocity in this case. The numbers जरा याद रख लो और बाकी मैं proceed करता हूँ. Okay, so when projected from the Earth's surface, we can say that based on law of conservation of energy, there is going to be a loss in the kinetic energy. हाँ ज़ैफा, मैं यार वो कर लेता हूँ, ठीक है. Just let me conclude with this working, फिर मैं 5 minutes का break दे देता हूँ बेटा. So loss in kinetic energy, and this will be equal to gain in gravitational potential energy. ठीक है, numbers लगाते हैं. Just keep in mind के numbers मैंने क्या दिए हुए थे. So your loss in kinetic energy will be half m v escape square
The right hand side will be delta phi into m. Once again, small m gets cancelled. If you proceed further, and assuming कि आपको numbers याद हैं, so final value minus the initial value. In terms of the alphabets, your final value is B, your initial value is A. So if you plug in the numbers, so अब अगर आपको numbers याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा scroll up करता हूं ताकि वो underline वाले numbers आपको याद आ जाएं. ठीक है, numbers एक नजर फिर देख लो. Minus 57.6 is one and minus 28.2 is the other one. So the final position is initial position is minus 57 point, I guess 4 tha. If I'm not wrong, let me just check once again. Minus 57.6 tha. Sorry yaar. Okay, and these values should be in the order of 10 to the power of 6. That number of 10 to the power of 6, I had mentioned that number on the vertical axis. ठीक है, so मैंने सारे numbers को use करके calculation अब करनी है. तो आयशा जरा फिर यार थोड़ा सा मुझे assist करो. Just give me the answer for the right hand side कितना बनेगा या पूरा solve कर लो. 7.7 लिखा है. हैदर नहीं यार, 7.7 तो नहीं लग रहा मुझे. You forgot the squares on V. Oh, V square. Okay, sorry. Thank you, Zephyr. You are attentive यार. तुम तो कह रहे थे कि सर मैं पास आउट कर जाऊंगा. तुम तो attentive हो यार, क्या हो गया? यार जरा प्लीज, हाँ आयशा तुम असेस करो या कोई और देख ले यार, ये कितना अमाउंट बनेगा वी एस्केप का. अच्छा. ओके. हाँ यार, okay, if I can get an answer, perfect. Thank you, Sen. So यार, the new escape velocity is coming out to be this. Now, before you pass out, Huzaifa, मैं ये क्वेश्चन पूछ के फिर 5 minutes ब्रेक दे देता हूँ. Why is this value significantly lesser than the previous answer of 11,200, which was obtained assuming Earth to be in isolation. So why is this value coming out to be significantly lesser as compared to the previous answer of 11,200, which was obtained assuming Earth to be in isolation? So any suggestion यार कि ये आंसर क्यों कम आ रहा है? So 11,200 was required to send the object all the way to infinity. This value is much smaller because this time around
we are only projecting the object until it reaches the null point. हाँ जी, हुसैन ने सही लिखा हुआ है. Previously we took infinity. This is what his answer is. This time around we only took the idea of null point. So short form में ये idea सही है. मैंने पूरा statement लिख दिया है. 11,200 meters per second was required to send the object all the way to infinity. So a much higher value was needed. This value is much smaller because this time around we are only projecting the object until it reaches the null point. So Huzaifa, just bear with me for another couple of minutes ताकि मैं इस question का एक second part पूछ लूं. फिर मैं break दे देता हूं. So what if the question now was assuming that it just passes the null point with negligible speed. चल हुजैफा तू ही अटेम्प्ट कर, फिर मैं ब्रेक देता हूं. Assuming that it just passes the null point with negligible speed, suggest what will happen. So going back to the diagram, Huzaifa, in case if you need that, if it just goes past the null point, तो अगर ऑब्जेक्ट आपके null point को थोड़ा सा भी क्रॉस ओवर करके आगे चला जाता है, so based on the diagram, what should we expect कि अब आगे क्या होना चाहिए? Let me just zoom out. So if the object were to go just past the null point, then what should we expect कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? तो looking at the diagram, जो स्टेटमेंट हुसैन ने लिखा है वो सही है. अच्छा रायान, इट रिमेन स्टेशनरी तो नहीं हो सकता, बिकॉज नल पॉइंट को क्रॉस करके अगर ये आगे चला जाएगा रायान, then the moon's gravitational field will start playing its role, and consequently the moon will now start pulling the object towards itself. So rather than saying it will remain stationary, the answer should be it will continue moving until it strikes the moon's surface. जी बिल्कुल. So it will, मोहित ने लिखा हुआ है, it will eventually get attracted to it. उमर रागिब ने लिखा है it will not return back. रिटर्न तो वो वैसे भी नहीं करता था उमर. सो उमर रागिब अगर वो नल पॉइंट पे भी पहुंच जाता ना तो भी वो रिटर्न बैक नहीं करता. सो इफ इट गोज पास द नल पॉइंट, श्योरली वो रिटर्न बैक तो नहीं करेगा, बट रादर अ मोर ऑब्वियस आंसर शुड बी it will continue moving, and now the moon's gravitational field will try to pull it towards itself. So hence the wording, it will continue moving until it strikes the moon's surface. So what if you are asked, अब हुजैफा मुझे गालियां दे रहा होगा, using the above info, calculate the velocity slash speed with which it will strike the moon. बस एक मिनट रुक जा चंदा, ताकि यार मैं बीच में ना रोकना पड़े ना हुजैफा. So using the above info, calculate the velocity or the speed with which it will strike the moon. So यार, if I were to just quickly reconstruct that same diagram, ताकि मुझे बार बार scroll up ना करना पड़े, and this was the standardized shape. अब मैं different color combos use नहीं कर रहा क्योंकि हुजैफा नाराज हो रहा है, तो यार एक ही कलर से बना देते हैं. So अब यार, for this part, I think you would be in agreement. Okay, now for this part, I would be right in assuming कि जो B वाला point है, I should now be taking the B वाला point as my initial position.
because it has just gone past the null point, and I should be taking the point C as my final position. So based on the wordings of the question, now I'm rather interested in the portion which I am highlighting. माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है. अब I'm interested in this portion. ठीक है मेरे भाई, if you guys are with me, can I explain the part 2 again? Okay, Tasneem. Assuming that it passes the null point with negligible speed, suggest what will happen. So Tasneem, I'll go back to the first diagram. So Tasneem, एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, नल पॉइंट को क्रॉस करके थोड़ा आगे चला गया. So Tasneem, बताओ क्या होगा अगर वो नल पॉइंट को क्रॉस करके आगे चला जाता है. So the statement which I wrote, Tasneem, was if it goes past the null point, then the tendency would be it will continue moving until it strikes the moon's surface. So if that makes sense, तो पहले मुझे उसका yes कर दो. ठीक है. So that was my part 2. And my final part of the question was, ठीक है, so तस्नीम आपका 2 वाला part actually ये था. ठीक है, assuming that it just passes the null point with negligible speed, suggest what will happen. So it will continue moving until it strikes the moon's surface. And then the third part is, using the above info, calculate the speed / velocity with which it will strike the moon. So basically अब मैं ये वाला part कर रहा था. Mustafa is saying, can we write that the object will accelerate towards the moon? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं. So that statement is correct. Or by itself, that statement is correct. Nothing wrong with that statement. No issues, Taslim. Okay, so coming back to this working, जो numbers मैंने दिए थे ना, let me quickly quote those numbers. I think there was a minus 50 something. मुझे खुद भी याद नहीं है. Minus 57.6 था. Okay, then I guess एक ये वाला point था. एक तो डीएचए वालों ने जिंदगी मेरी पिछले 5 दिनों से बर्बाद की हुई थी. आई एम इन फेज 6, राइट इन द एपिसेंटर के, जहां पर ये सारा यूजलेस काम हो रहा था, और 5 दिनों तक लाइट नहीं थी. तबाह वो बर्बादी कर दी इन्होंने, जिंदगी खराब कर दी. संडे की रात को जाके लाइट आई है मेरे पास. Okay, these were the numbers, I believe. So I've just written down the numbers for your convenience again. Okay, प्रोटेस्ट में गए थे, सोचा बहुत था हुसैन, बहुत दिल भी कर रहा था. आयशा ने आंसर दे दिया. आयशा, I'll just move on to that answer in a bit. हुसैन सोचा बहुत था यार, वाकई बहुत दिल कर रहा था कि यार इनके पास जाके थोड़े से पत्थर मार कर आ जाऊं. फिर पता नहीं क्या किया. शिफ्ट टू केडीए स्कीम 1. या यू राइट, पता है, बट ट्रैफिक बहुत हो गया अहमद. फेज 8 चले जाना चाहिए यार, वहां ट्रैफिक कम है. एक्चुअली पाकिस्तान ही छोड़ देना चाहिए, सबसे आसान तो यही है. सिर्फ पत्थर, आई थिंक सिर्फ पत्थर. हाँ यार, मतलब मैं बहुत जज्बाती नहीं हूँ, सो आई थिंक पत्थर ही पर जाता, और कुछ तो नहीं करता. So yeah, coming back to this working. So basically, I've stated the initial and the final position. So the working approach would be as the object approaches moon, from the moon's perspective, we can say that. And the worst part is लोगों का नुकसान बहुत हुआ यार. Especially the commercial area, the Bukhari commercial and everything, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है. So as the object approaches moon, from the moon's perspective, we can say that there is going to be a gain in the kinetic energy, and there is going to be a loss in the gravitational potential energy.
So gain in kinetic energy can be written down as half mv square. This v should now be read as the approach velocity. ठीक है, I think that makes sense. कि हाफ एम वी स्क्वायर के साथ मैंने v को लिख दिया है अप्रोच. अली मुझे 1 मिनट का टाइम दे देना, मैं अभी बेटा ऊपर इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ. डिड योर बेसमेंट? नहीं, अल्लाह का शुक्र है यजदान के बेसमेंट की बचत हो गई थी. पानी के टैंक वगैरह सारे बर्बाद हो गए, लेकिन बेसमेंट की बचत हो गई. लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी वंस अगेन फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू इनटू m. तो अली मैं अभी मूव करता हूँ, स्क्रॉल अप कर देता हूँ ताकि यू कैन सी द नंबर्स. But just let me get through with the statements. Okay, so yeah, based on the numbers provided to you, ठीक है, I've just drawn the graph 3 times at least ताकि आपको numbers मिल जाए. So final position will be C, initial position will be B, so yeah, numbers आपके ये बन जाएंगे. So C वाली position के लिए it is minus 34.4, B वाली position के लिए minus 28.2. Again, both of these numbers are in the order of 10 to the power of 6. और I believe आयशा ने आंसर निकाल लिया था. So the approach velocity as it strikes the moon's surface will be. मैं आयशा वाला आंसर लिख देता हूँ. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट. ओके, आयशा का 3521 आ रहा है. ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ, मैं तब तक नमाज भी पढ़ लूँ, तुम लोग चिल आउट कर लो. अली, यू वांटेड मी टू स्क्रॉल अप, सो अली जस्ट लेट मी नो, इज दिस द पोर्शन यू आर इंटरेस्टेड इन? एडम, एसेंशियल काम जो होगा ना वो फर्स्ट 2 क्लासेस में हो जाएगा. नो द ग्राफ. ओके, सो अली ये वाला था. ओके अली, इट्स द सेम ग्राफ जो मैंने नीचे भी बनाया था. सो आई एक्चुअली कॉपी डाउन दिस ग्राफ ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. सो आई एक्चुअली कॉपी डाउन द सेम इन्फॉर्मेशन right at the end of the question as well. ठीक है, just in case if you're wondering. सही यार guys, give me 5 minutes, मैं नमाज पढ़ लूँ फिर इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ.
All right, yaar. So one last thing is left in this topic to conclude. अभी बस करा देता हूँ, 5 minutes का काम है. So let's see if I can use the same slide. हाँ ठीक है, इसी इसी पेज पे करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आज कंक्लूड हो जाए. तो फिर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर I'll start with FHM. All right, so the final working that's left is expressions for kinetic energy, gravitational potential energy, सिंबल्स आपकी चॉइस है जो आपको सही लगे. And total energy for a satellite performing circular motion around the source mass. उमर सिंह, हार्डेस्ट टॉपिक कौन सा है यार? हार्डेस्ट का तो मुझे नहीं पता, बट दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट. ये लेंथी है. हार्डेस्ट का तो मुझे आइडिया नहीं है कौन सा होगा. मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज आई फील कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एग्जामिनर हैज द मार्जिन कि वो क्वेश्चन को घुमा सकता है. ओके, सो expressions for calculating the kinetic energy, the gravitational potential energy and the total energy for a satellite performing circular motion. डायग्राम पहले देख लो, फिर इसकी कैलकुलेशन के फॉर्मूलास करा दूं. सो यार, अर्थ को मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है. सैटेलाइट को स्मॉल एम करके बना देता हूं. ठीक है, एंड द डायग्राम इज इंप्लाइंग दैट द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. माशाल्लाह, अच्छा सर्कल बन गया एट अ डिस्टेंस आर. ठीक है यार, 3 फॉर्मूलास करना है ना. So starting with the formula for kinetic energy. So remember, the gravitational force provides the centripetal force. So gravitational force will be Gmm upon r square. Centripetal force will be mv square upon r. From here you will get v square is equal to gm upon r. So एक ये result आ गया. And then since you are interested in obtaining the answer for kinetic energy, so kinetic energy will be half m v square. So substitute v square. To get the first result. Substitute आप कर लो. तो यार आपका फर्स्ट रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा. ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया. अच्छा, रिजल्ट के साथ का स्टेटमेंट भी देख लो.
Here, since kinetic energy is inversely proportional to R, therefore, as R decreases, kinetic energy increases. So I hope that makes sense because inverse proportion की relationship है. So you guys should be okay with the first result. तो पहला फॉर्मूला आ गया. अच्छा जी, अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं. तो सेकंड रिजल्ट था बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का. ये तो डायरेक्ट आ जाएगा. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी U is equal to phi into m. If you want, you can replace phi with the result. Phi is equal to minus gm upon r. तो यार अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपका फाइनल आंसर ये बन जाएगा. बॉक्स बना देता हूं. इसके अंदर यार बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज ये एक स्टेटमेंट केयरफुली देख लो जो मैं रेड से लिख रहा हूं. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन आर. प्लीज देखिएगा नेगेटिव साइन आ रही है. सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन आर. सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. As r decreases, U becomes प्लीज ये रीड करो सब. है ना. प्लीज मैथमेटिकली आपको इनवर्स और नेगेटिव इनवर्स का फर्क समझ में आना चाहिए. ठीक है, मैं वापस कह रहा हूं. इनवर्स में ये होता है कि एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. दैट्स इनवर्स प्रोपोर्शन, एज यू कैन सी विद काइनेटिक एनर्जी. नेगेटिव इनवर्स में ये होता है एज वन क्वांटिटी डिक्रीजेस, द अदर क्वांटिटी बिकम्स इवन मोर नेगेटिव, तो वो भी डिक्रीज करती है. सो प्लीज इस बात को रिकग्नाइज कीजिएगा कि माइनस साइन के आने से मैथमेटिकल वर्जन आपका चेंज हो जाता है. सो फर्स्ट रिजल्ट वाज फॉर काइनेटिक एनर्जी, सेकंड रिजल्ट वाज फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और बस एक लास्ट रिजल्ट और लिख के कंक्लूड करता हूं. थोड़ी सी डॉट को जो है ना डार्क करके बना दूं. तो फर्स्ट रिजल्ट वाज फॉर काइनेटिक एनर्जी, द सेकंड रिजल्ट वाज फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, आई एम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट. नो आयशा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर इट्स अ स्ट्रेट लाइन. इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर इट्स अ कर्व. सो दे आर नॉट द सेम. ठीक है. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज अ लीनियर रिलेशनशिप, इनवर्स इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप. तो ये भी एक डिफरेंस होता है बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड नेगेटिव इनवर्स. सही. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इनवर्स का हमेशा कर्व बनेगा. ओके. सो काइनेटिक एनर्जी वाज इनवर्स रिलेशनशिप, एक वैल्यू कम होगी दूसरी वैल्यू बढ़ेगी. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाज नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा. यस आयशा, नाउ योर स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, योर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. और जो लास्ट रिजल्ट था वो लिख दूं. So the third and the final result was for total energy. So total energy should be kinetic plus potential. So basically, kinetic was the first, gravitation potential energy was the second wala answer.
नहीं, इफ यू वांट मैं 1 एंड 2 की लेबलिंग भी कर देता हूँ। लगा देते हैं भाई। तो यार आप टॉप से जरा प्लीज आंसर्स देख लीजिएगा, मैं ग्रीन वाला आंसर पहले रिप्लेस कर रहा हूँ। अब वो पर्पल वाला आंसर रिप्लेस कर रहा हूँ। और आखिर में फाइनल आंसर लिख देता हूँ। वंस अगेन प्लीज रिकग्नाइज, यहाँ पर भी माइनस साइन आ रहा है। तो माइनस साइन का अगेन ये मतलब बनेगा, जो मैं रेड वाले मार्कर से लिख रहा हूँ, फिर कंक्लूड कर दूं। टोटल एनर्जी is proportional to minus 1 upon r. So once again, because of the negative sign, as r decreases, ठीक है। सो प्लीज वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, काइनेटिक एनर्जी फॉलोज एन इनवर्स रिलेशनशिप, वन क्वांटिटी कम होगी दूसरी बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज टोटल एनर्जी, दे बोथ फॉलो नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप। तो माइनस साइन की वजह से रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो लास्ट के दोनों फॉर्मूलाज के अंदर ये होगा कि वन क्वांटिटी विल डिक्रीज एज आई एम शोइंग राइट नाउ, द अदर क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है यार, दिस कंक्लूड्स द वर्किंग। सो आज वाली क्लास में इस वाले पॉइंट पे स्टॉप करता हूँ, फिर या नेक्स्ट वाली क्लास से इसको कंटिन्यू कर लूंगा। सो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस अगली क्लास में स्टार्ट करना है। सो होपफुली वो स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, बाय यार, टेक केयर, सी यू अराउंड, खुदा हाफिज बेटा।